फर्स्टली ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर breathing and exchange of gases. Breathing and exchange of gases. फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फर्स्ट वी विल स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर, जिससे हमें पता चलेगा लाइन टू लाइन क्या क्या लिखा है, क्या क्या नहीं लिखा है। इससे हमें सारी बातों का पता लगेगा और इम्पोर्टेंट लाइंस को हम नोट डाउन करेंगे और हाईलाइट करेंगे। Oxygen introduced by the organic breakdown of simple molecules. Indirectly breakdown of simple molecules like glucose, acid, fatty acids, etc. to derive energy from various activities. Carbon dioxide, CO2, which is harmful, is also released during the catabolic reactions. It is therefore evident that O2 has to be continuously provided to the cells. CO2 produced by the cell have to be released. CO2 produced by the cells have to be released out. This process of exchange of O2 from atmosphere which produced by the cells is called breathing. This process of exchange of O2 from atmosphere with CO2 produced by the cells called breathing. Exchange of O2 from atmosphere with CO2 produced by the is called breathing, commonly known as respiration. Respiration. Place your hands on your chest. You can feel the chest moving up and down. You can move that. It is due to breathing. How do we breathe? The respiratory organ and the mechanism of breathing are described in the following sections of this chapter. Respiratory organs. Respiratory organs like mechanism of breathing vary among different groups of animals depending mainly on their habitats and level of organization. Habitat and level. Lower level invertebrates like sponges, ciliates, flatworms, etc. exchange O2 with CO2. By simple diffusion. Invertebrates like sponges,
Coelentrates, 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 flatworms, flatworms, worms, etc. etc. Exchange auto with by simple diffusion. Exchange, exchange, auto with CO2, CO2 by simple diffusion, simple diffusion, diffusion. This is the point which is important, like एनिमल किंगडम से रिलेटेड है, ये उसके एग्जांपल्स हैं, तो क्वेश्चंस इनमें से बन सकते हैं. Over the entire body surface, earthworms use their moist cuticle. Insects have a network of tubes. सो इंसेक्ट्स कैसे रेस्पायर करते हैं? थ्रू ट्रैकियल रेस्पिरेशन. जो इनमें ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं उसके थ्रू इंसेक्ट्स रेस्पायर करते हैं. सो इन इंसेक्ट्स respiration takes place by trachea, and earthworm with their moist skin. Earthworm with their moist skin. This is gonna be like insects have a network of tubes, tracheal tubes, transport oxygen to the body. Special vascularized structure called gills. With gills, like gills से किन में होता है? Gills से कौन कौन रेस्पायर करते हैं? Like used by most of the aquatic arthropods and molluscs. Is vascularized bags called lungs. Pulmonary respiration are used by terrestrial forms for the exchange of gases. Among vertebrate species use gills. There are amphibians, reptiles, birds, and mammals respire through lungs. Amphibians like frogs can respire through their moist skin, which is called as cutaneous respiration. We can study this in the Animal Kingdom chapter, जिसमें frog के बारे में दिया गया है. फ्रॉक के बारे में स्ट्रक्चर में दिया गया है, उसमें जाके हम फ्रॉक के बारे में ये पढ़ सकते हैं कि वो मॉइस्ट स्किन से भी करता है. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. इसके क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम आते हैं. Like we have completed one paragraph and I'm jumping on the next paragraph. Human respiratory system. What is human respiratory system? We have a pair of external nostrils. Firstly, we will start from the nostril, from nose. So we have a pair of external nostrils opening out above the upper lips. Location क्या है? Above the upper lips. It leads to our nasal chamber. Through the nasal passage. लीड कहाँ से करता है? नेजल चैम्बर से. किसके थ्रू? नेजल पैसेज के थ्रू. द नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू फेरिंग्स. द नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू फेरिंग्स. नेजल चैम्बर कहाँ ओपन होता है? फेरिंग्स में. नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू फेरिंग्स.
तो ये पाथवे इम्पॉर्टेंट है। लाइक अभी मैं ये पैरा पढ़ के इसका पाथवे लिखूँगा साइड में जो स्पेस बचा हुआ है, ताकि मुझे याद रहे। अ पोर्शन ऑफ विच इज़ कॉमन which is the common passage for food and air. The pharynx opens through the larynx region. pharynx कहाँ से ओपन होता है, किस जगह से? थ्रू larynx region. pharynx open through larynx region. larynx और कहाँ larynx किस में जाता है, जाके मिलता है? ट्रैकिया में। ये larynx को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, वॉइस बॉक्स। लाइक larynx इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। सो फेरिंग्स से लैरिंग्स से ट्रैकिया में, ट्रैकिया वाले रीजन में, इनटू ट्रैकिया। लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स। लाइक कहा था ना, लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स। लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन। विच हेल्प, तो लैरिंग्स का वर्क क्या है? साउंड प्रोड्यूस करना, इसलिए हम इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, साउंड बॉक्स भी कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन, हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन, हेल्प्स लैरिंग्स। लाइक पॉइंट्स भी साथ के साथ बनाता जा रहा हूँ, ताकि बाद में मुझे मैं भूल ना जाऊँ उस पॉइंट्स को, और उसे लिखने के बाद मुझे डबल रिवीजन हो जाएगी। जब मैं चैप्टर खोलूँगा तो वो चीज़ें मुझे दोबारा रिपीट होंगी। लैरिंग is a cartilaginous box helps in sound production helps in sound production, and also called as sound box, and also called as and also called as sound box, also called as sound box. During swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis. जब हम फूड इनगल्फ करते हैं तो जो उसकी ऊपर की जो कवरिंग होती है ना, उसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। वो ढक देता है उसे, ताकि फूड उसमें ना जाए, ट्रैकिया में ना जाए। सो सो तो एपिग्लोटिस का काम क्या है? प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स। व्हाट इज द वर्क ऑफ एपिग्लोटिस? प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स। एपिग्लोटिस is a thin elastic cartilaginous flap. Thin elastic cartilaginous flap called as epiglottis. Epiglottis. और इसका वर्क क्या है एपिग्लोटिस का? प्रिवेंट द entry of food
into the larynx, into the larynx, into the larynx. नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं ट्रैकिया इज़ अ स्ट्रेट ट्यूब. ट्रैकिया इज़ अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडेड अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी. कहाँ से कहाँ तक होता है? एक्सटेंडेड अप टू मिड थोरेसिक कैविटी की. मिड थोरेसिक कैविटी तक एक्सटेंडेड होता है ट्रैकिया. मिड थोरेसिक कैविटी तक ट्रैकिया कहाँ तक एक्सटेंडेड होता है? मिड थोरेसिक कैविटी तक. मिड थोरेसिक कैविटी तक. विच डिवाइड्स एट लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे. और ये कहाँ जाके डिवाइड होता है? विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे. फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे. फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई. और किन में जाके मिलता है? लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई. राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में. into right and left primary bronchi. Each bronchi undergoes repeated division to form the secondary and tertiary bronchi and bronchioles. हर एक ब्रोंकाई जाता है रिपीटेड डिवीजन में फ्रॉम द सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स. Each bronchi undergoes repeated division to form secondary and tertiary bronchi and bronchioles. हर एक ब्रोंकाई सेकेंडरी और टर्शरी डिवीजन करता है और क्या फॉर्म करता है? ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स को. एंडिंग अप इन अ वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. एंडिंग अप in a very thin terminal bronchioles. The trachea, primary, secondary, tertiary bronchi, and initial bronchioles are supported by incomplete. These three primary, secondary, and tertiary bronchi. So, primary, secondary, and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by. किससे सपोर्टेड होते हैं? आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग. आर सपोर्टेड बाय सर incomplete cartilaginous ring. Incomplete cartilaginous ring. Each terminal bronchiole gives rise to a number of very thin. Each terminal bronchiole gives rise to a number of very thin. क्या इससे क्या निकलते हैं? गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स. ये असर्शन और रीजन में एक क्वेश्चन आ सकता है. लाइक ये इसे फ्रेम करेगा इस टाइप में, लाइक rise to a number of very thin, irregular and vascularized bag-like structure called alveoli. alveoli की जगह कुछ और दे देगा, वेस्कुलराइज की जगह अनवेस्कुलराइज दे देगा, नॉन वेस्कुलराइज दे देगा. स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वेलाई. इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? एल्वेलाई कहते हैं. द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकिया. द ब्रांचिंग नेटवर्क of bronchi, bronchioles and alveoli comprises the lungs. इनकी ब्रांचिंग को मिला के क्या बनता है? ब्रोंकाई की, ब्रोंक्योल्स की और एल्वेलाई की. इनकी ब्रांचिंग से क्या बनता है? लंग्स. लंग्स कंप्राइजेस. इन तीनों को मिला के, चारों को मिला के लंग्स, कलेक्टिवली लंग्स कहते हैं हम, जो कि हमें दिखा रहा है फिगर 17.1 में. डायग्राम इज अ सेक्शनल व्यू. तो डायग्राम हमेशा याद रखना. और जो ये सी शेप्ड के दिख रहे हैं ना, तो मैं इन्हें एक बार अपने एनसीईआरटी में लिख लेना. हाइलिन कार्टिलेज पूछता तो नहीं है, कभी आ जाए बट. और कितने कार्टिलेज होते हैं लैरिंग्स में? 9 कार्टिलेज होते हैं. दिस इज इम्पोर्टेंट. We have two lungs which are covered by a double layered pleura with pleuritic fluid. हमारे पास कितने lungs होते हैं? One pair, like 2 lungs होते हैं. We have two lungs which are covered. We have two lungs which are covered by a double layered pleura. Double layered pleura.
डबल लेयर प्लूरा, और वो किससे फिल्ड होते हैं? प्लूरल फ्लूइड से बिटवीन दैम। इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑन द प्लूरल फ्लूइड का काम क्या है? प्लूरल फ्लूइड का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड? प्लूरल फ्लूइड, फ्लूइड प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन क्या है? प्लूरल फ्लूइड, it reduces the friction on the lung surface. It reduces the friction on the lung surface. Now we have completed this para also, बस एक लाइन रह गई है. It reduces friction surface on the lung surface. The outer pleural membrane is in the close contact with, जो हमारा outer pleural membrane है, जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ. This is outer pleural membrane. ये किसकी कांटेक्ट में होता है? This is the contact with the thoracic lining, whereas thoracic lining के कांटेक्ट में होता है. The outer pleural membrane is in close contact with the thoracic lining, whereas the inner pleural membrane is in contact with the lung surface. और inner pleural membrane किसके contact में होता है? lung surface के. Inner pleural membrane is in contact with the lung surface, and outer pleural membrane is in contact with the thoracic. Just ये भी line हमने complete कर लिया है. Contact with the lung surface. The part starting with the external nostrils. The part starting from the external nostrils to the terminal bronchioles. External nostrils से लेके terminal bronchioles तक constitutes the conducting part, whereas ये conducting part बनाता है जिसमें exchange of gases होते हैं, like inspiration, expiration, constitute the conducting part, whereas the alveoli and their ducts from the respiratory or exchange part of the respiratory system. Conducting part transport the atmospheric air to the alveoli. The conducting part transports the atmospheric air to the alveoli. ये जो conducting part है, bronchioles, alveoli and their ducts, ये क्या करते हैं? एयर को कंडक्ट, एटमॉस्फेरिक एयर को कंडक्ट करते हैं कहाँ? टुवर्ड्स द एल्वेलाई एंड क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स. और इसमें से जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उसे रिमूव करते हैं एंड फ्रॉम ह्यूमिडिफाई करते हैं एंड ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर. और उस एयर को क्या करते हैं? हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर लेके आते हैं. This is also a work of alveoli. Also brings the air to the body temperature. Exchange part is the site of actual diffusion. Exchange part is the site of actual diffusion of O2 and CO2 between blood and atmospheric air. The lungs are situated in the thoracic chamber. Lungs कहाँ पे? Lungs की location क्या है? Thoracic chamber. The lungs are situated in the thoracic chamber. What is the location of lungs? Is thoracic chamber. NCERT में क्या दे रखा? Thoracic chamber, which is anatomically an airtight chamber. ये क्या है? एक airtight chamber.
which is anatomically an airtight chamber. The thoracic chamber is formed dorsally. thoracic chamber का साइड वे बताया है, कैसा है, डोर्सल है या वेंट्रल है, ठीक है। सो कैसे कनेक्टेड है, डोर्सली कनेक्टेड है या वेंट्रली कनेक्टेड है, ये एक और लोकेशन बताइए आपको। तो thoracic chamber is formed dorsally. The thoracic chamber formed dorsally by the vertebral column. वर्टिब्रल कॉलम से कैसे कनेक्टेड है, डोर्सली कनेक्टेड है। वेंट्रली बाय स्टर्नम, और वेंट्रली स्टर्नम से जुड़ी हुई है, वेंट्रली स्टर्नम से जुड़ी हुई है, वेंट्रली बाय स्टर्नम। डोर्सली बाय vertebral column and ventrally by sternum, ventrally by sternum. Dorsally vertebral column, dorsally vertebral column, and ventrally sternum, sternum, ventrally sternum. Laterally by ribs, और laterally कैसे हैं, ribs से हैं, laterally by ribs on the lower side of the dome shaped diaphragm, और कौन सी जगह पे हैं, lower side of the dome shaped diaphragm. Diaphragm की shape क्या है, dome shaped diaphragm. The anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in the volume of thoracic cavity will reflect in the lung. The anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity, अगर कोई भी चेंज होता है वॉल्यूम में thoracic cavity की, तो वो डायरेक्ट अफेक्ट करता है लंग्स की पल्मोनरी कैविटी को। सच एज अरेंजमेंट इज इसेंशियल फॉर ब्रीथिंग एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, और हम डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को खुद से अल्टर नहीं कर सकते। The anatomical setup of lungs is thorax is such any change of the volume. The anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will reflected in the lung pulmonary cavity. Such an arrangement is essential for breathing. Arrangement is essential for, as we cannot directly alter the, we cannot डायरेक्टली ऑल्टर, वी कैन डायरेक्टली, अगर ये असर्शन रीजन में दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे कैन नॉट की जगह वी कैन डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। पहली लाइन ऐसे ही दे देगा असर्शन की, और दूसरी में ऐसे कर देगा, वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम की जगह वी कैन डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। तो हमें हर एक पैरा में ऐसा देखना है कि भाई इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते, क्योंकि नॉर्मली तो हमें पता है कि जो है हमसे पूछता है उसकी वो या तो न्यूमेरिकल डिजिट्स पूछ लेता है, या उसके बारे में कुछ पाथवे का जो बीच का फंक्शन होता है वो पूछ लेता है। दीज ऑल आर द थिंग्स जो हमें ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन किस टाइप से फ्रेम हो सकते हैं। तो इसके बाद हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। फर्स्ट, ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम अंदर लेते हैं, ठीक है।
by atmosphere is drawn in and CO2 rich alveoli is released out. और CO2 को क्या करते हैं, रिलीज आउट करते हैं. लाइक अब सेकंड में आ गया डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन. और फिर क्या होता है, उसके बाद का प्रोसेस क्या है, गैसेस का डिफ्यूजन होता है एल्वुलर मेम्ब्रेन में. एंड थर्ड फिर होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. फिर उस गैस को हम ब्लड में मिक्स करते हैं, फिर वो गैस जाके ब्लड में मिक्स होता है और पूरी बॉडी तक जाता है. तो फोर्थ स्टेप है, ये क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, स्टेप वाइज पूछेंगे और बीच का कोई स्टेप गायब कर देंगे, और या अरेंजमेंट पूछ लेंगे, ऑर्डर पूछ लेंगे पहले से दूसरे में, या आखिरी से लास्ट से ऊपर के में, या तो ऑर्डर में आएगा, या प्रोसेस पूछ लेगा पहले कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, या बीच में से एक गायब कर देगा. यही पॉसिबिलिटीज हैं इस पे क्वेश्चन बनने की. और फोर्थ है डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू. फिर उसके बाद क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम में मिलने के बाद वो जो O2 और CO2 है वो ब्लड में और टिश्यू में जाके जहाँ बॉडी को रिक्वायरमेंट है वहाँ चला जाता है. एंड फिर फिफ्थ क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स. और उस O2 का सेल्स क्या करती हैं, यूटिलाइजेशन करती हैं इन कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2. और फिर CO2 का रिलीज करती हैं. सेलुलर रेस्पिरेशन एज डेल्ट इन द चैप्टर 14 and so on. We have completed this para also, first, second, third, fourth, fifth. Now let's jump on mechanism of breathing. Breathing involves two stages. Uh, breathing involves two stages. First is inspiration. Wait a second. Breathing involves two stages. First one is inspiration. We have to study inspiration during which atmospheric air is drawn in, जिसमें कि हम एटमॉस्फेरिक को अंदर लेते हैं. उसके बाद क्या करते हैं, एक्सपिरेशन करते हैं. उसके बाद जो हम ऑक्सीजन बाहर से अंदर लेते हैं, फिर उसके बाद जो हमारे अंदर की CO2 होती है उसे हम बाहर करते हैं. दिस इज ऑल्सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस. वी हैव स्टडीड लाइक पीछे के जो पैराग्राफ हैं उसमें हमने यही पढ़ा है. O2 लेते हैं, CO2 निकालते हैं. सो इसी को हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के वे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले क्या होता है, इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन क्या, कौन सी प्रोसेस है, एक्टिव है या पैसिव है. सो इंस्पिरेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस और एक्सपिरेशन है पैसिव प्रोसेस. सो ये मैं नोट डाउन कर लूँ इसमें. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. Inspiration, also called as inhalation, is an active process, and expiration, it is a passive process. Now, by which the alveolar is released out. एक्सपिरेशन से क्या होता है, जो भी हमारे अंदर की एयर है वो रिलीज आउट होती है. एक्सपिरेशन इज रिलीज्ड बाय एक्सपिरेशन और ड्रॉन इन बाय इंस्पिरेशन. द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू
into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient. जो भी हम इनहेलेशन करते हैं और एक्सहेलेशन करते हैं, इनको कैरिड आउट करने के लिए हमें एक प्रेशर ग्रेडियंट की ज़रूरत होती है. The movement of air into and out lungs is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere. Lungs and the atmosphere. Inspiration can occur if the pressure within the lungs, interpulmonary pressure. Just wait a second. काफ़ी रात हो गया. कितने बज रहे हैं? 10:30, 10:35 और 10:35. Now I'm gonna change this also. Now हो गया ये. Inspiration can occur if the pressure in the lungs, intrapulmonary pressure, is less than the atmospheric pressure. इंस्पिरेशन कब होता है? जब इंटरपल्मोनरी प्रेशर लेस देन हो एटमॉस्फेरिक एयर के. सो एटमॉस्फेरिक के लेस देन हो, ये एक पॉइंट है, ये लिख लो साइड में अपनी. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई गेस, क्योंकि एटमॉस्फेरिक atmospheric air is less than atmospheric is greater than lungs pressure. ठीक है. Now we are jumping on the next. Is less than the atmospheric pressure, that is there is a negative pressure in the lungs, जिसकी वजह से क्या होता है, एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है लंग्स में. is a negative pressure in the lungs with respect to atmospheric pressure. Similarly, expiration takes place when the intrapulmonary pressure is higher. और similarly जो expiration this is for inspiration and second one is for expiration. Similarly for expiration
expiration takes place when the intrapulmonary pressure is expiration takes place when the intrapulmonary pressure lung का pressure greater than no atmospheric pressure से this is for expiration, this is for inspiration. Now we're jumping on the next line. Similarly, the expiration takes place when the interpulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. The diaphragm and a specialized set of muscle. The diaphragm or specialized set of muscles and external and internal intercostal between the ribs helps in the generation of such gradient. तो इस gradient को कौन बनाता है? डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इस ग्रेडियंट को बनाने में हेल्प करती हैं. सो ये लाइन भी हम हाईलाइट करेंगे. डायफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बिटवीन द रिब्स. कहाँ पे है इनकी लोकेशन? बिटवीन द रिब्स. Help in generation of such gradients. Inspiration is initiated by the contraction of diaphragm. Inspiration is initiated by the contraction of diaphragm. Inspiration is initiated by the contraction of diaphragm. Inspiration कैसे takes place करता है? By the contraction of diaphragm. जब diaphragm contract करता है तब inspiration होती है ताकि हम बाहर की एयर को इनहेल कर सकें. और फिर दूसरा पार्ट जो वर्क करता है वो एक्सपिरेशन का करता है, जो कि अंदर की एयर को एक्सेल आउट करते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे. Which increases the volume of thoracic chamber. और ये thoracic chamber के वॉल्यूम को बढ़ा देता है, क्योंकि हमें एयर अंदर लेनी है तो वॉल्यूम स्पेस को बड़ा करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एयर अंदर आए. In the anterior posterior axis, the contraction of external intercostal muscle lifts up the ribs. और बाकी हमें प्रोसेस बताया जा रहा है, लाइन टू लाइन प्रोसेस बताया जा रहा है कैसे हम एयर अंदर लेते हैं और डायफ्राम का साइज बढ़ जाता है. एंड फिर वो कहाँ से कहाँ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल थोड़ी ऊपर की तरफ आ जाती हैं. अब आते हैं नेक्स्ट. नाउ वी आर जंपिंग ऑन द नेक्स्ट पेज. Sternum causing an increase in the volume of the thoracic chamber. Sternum causing an increase in the volume of thoracic chamber in the dorsoventral axis. The overall increase in thoracic volume causes a similar increase in. So ये लाइन नोट डाउन जरूर कर लेना. The overall increase in thoracic volume causes a similar increase in pulmonary volume. ठीक है. And increase in pulmonary volume decreases the interpulmonary. जब पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ता है तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज करता है. जब पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ता है तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाता है. ठीक है. When the pulmonary volume increases और फिर decreases in the interpulmonary pressure
जो कि लेस देन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जो कि क्या है लेस देन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, विच इज़ लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच फोर्सेस द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू, जो कि विच फोर्सेस बाहर की एयर को अंदर आने के लिए मजबूर करता है, फोर्सेस द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स, दैट इज नोन एज इंस्पिरेशन। और हम इसे क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन कहते हैं और इनहेलेशन कहते हैं। इसके बाद आता है रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरकॉस्टल मसल्स, रिटर्न्स द diaphragm and the sternum to their normal position and reduce the thoracic volume and thereby the pulmonary volumes. This leads to an increase in pulmonary pressure to slightly of the atmospheric pressure, causing the expulsion of air from the lungs, that is expiration. When the body comes in the normal state, this is known as the expiration is internal intercostal muscles, internal intercostal muscle, and जो डायफ्राम है वो रेस्टिंग पोजीशन पे आ जाता है, किसमें एक्सपिरेशन में, द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्पिरेशन। नाउ दिस इज द लाइन फॉर द फोर्सफुल इंस्पिरेशन, strength of the inspiration and expiration with the help of additional muscle in the abdomen. On an average, healthy human breathes, healthy human कितना breathe करता है, 12 से 16 times in a minute. This is a line you should have to note. In normal human, a normal human